My dear boys and girls of GRE, GRE means Graduate Record Examination. And in this Graduate Record Examination, there are three things. Is that clear? We are trying to have verbal section. In verbal section, we have three things. First, reading comprehension. Second, sentence equivalence, and then text completion. Now today we are doing text completion. ठीक है? Text completion. Now let us start with me. Is that clear? तो मैं आपको एक ट्रिगर वर्ड बताऊंगा और that will try to take you towards your answer. It will try to give you the clue of the true answer. ठीक है? तो चलें फिर हम करते हैं. पहला हमारा है while more dash professor continue to insist that video games will never be a proper object of study. Is that clear? Comma, the rising generation of more heterodox academics is inclined to view such talk as positively. Dash. तो हमारे पास दो ब्लैंक हैं. Is that clear? We have two blanks. इससे पहले कि मैं आपको इसका ट्रिगर वर्ड बताऊं that try to indicate you towards your answer, पहले हम इन ब्लैंक को एनालाइज कर लेते हैं. पहला है पेडेंटिक. वैसे तो पेडेंटिक का मतलब होता है शोई. तो अगर आप इस पैरे को देखें, the closer affirming that this answer will be that orthodox. Pedantic, showy, ठीक है, लेकिन the nearest meaning of affirming that this word is orthodox. Progressive is a simple word. Erudite, learning, higher learning and things like that. और अब आप आ जाए दूसरे ब्लैंक में. दूसरा है एंटीडिलुवियन. इसका मतलब है एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन. इज दैट क्लियर? और अगला है पुसिलिमिनियस. इज दैट क्लियर? इसका मतलब है कावर्डी. पुसिलिनिमियस, कावर्डी. और अगला है जजून. इसका मतलब इमेच्योर, नॉट मेच्योर. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेंटेंस. लेट अस मूव टू आवर पैसेज. While more, I would like to tell you the trigger word, the clue word that will take you towards your answer, which is while. It's trying to give you the contrast. While more dash. अब कौन सी चीज़ आनी चाहिए? ऑप्शन हमारे पास तीन हैं. ये वी हैव थ्री ऑप्शंस. इज दैट क्लियर? ये देखिए थ्री ऑप्शंस है. पेडेंटिक, प्रोग्रेसिव, एरुडेट. अगर हम ये वर्ड वाइल है, इसको ट्राई टू स्ट्रेस दिस वर्ड and we will read towards our trigger word. This is our trigger word. We'll try to give you the contrast. While more pedantic फिर आएगा. Pedantic, first one. Professor. ये I would like to tell you the meaning over here is orthodox, closer to orthodox.
while more pedantic professors continue to insist that video games will never be a proper object of study. Is that clear? तो चले हम दूसरा करते हैं अब. The rising generation of more heterodox. Is that clear? Heterodox कहते हैं eccentric को, not conforming to usual standard and things like that. Is that clear? तो चले हम दूसरे ब्लैंक पर आए इस वक्त. पहला है I'm sorry for that. Antediluvian mean extremely old. And this is our answer. This should be our answer. Or jejune mean immature. और अगला वर्ड है दूसरा pusillanimous, coward. तो हमारा आंसर फिर ब्लैंक बी का बनेगा antediluvian मीन एक्सट्रीमली ओल्ड. तो चले फिर हम आगे चलते हैं नंबर 7 और हमारा दूसरा है. अब हमारे पास 3 ब्लैंक बॉक्स हैं. वी आर 3 ब्लैंक बॉक्सेस. तो हमने इसको बड़े आराम से करना है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू आर काम, इफ़ यू आर कूल, then you will, first of all, the thing which is very, very important, that you must be very comfortable, cool, psychologically, whatever may be the circumstances, you will definitely be a man of comfort. तो चलें फिर हम करते हैं इसको. Political predictions. You know, prediction. ये forecast है, forecast. Or you are to declare in advance and things like that. Generally prove fairly accurate when the presumption that the future will be similar to the past is. ठीक है. डैश और अगला है in period with substantial option 2 blank 2 in the political. Is that clear? In the political word, comma, however. Now let us analyze the word however. The basic function of the word is a trigger word. It tries to take you from one idea to another idea. Or in other words, we can move from one idea to another idea. It's a kind of contrast. So chale, this is our trigger word. However is our trigger word. Is that clear? Comma, a prediction can be dash. अगर आपने trigger word को ज़हन में रखा है, which will try to give you, that of a contrast. However, the very function of a however is trying to move you from one idea to another idea. तो चले फिर हम करते हैं इसको. To the past is changes. पहला है ये सॉरी टू से पहला हमारा है fulfilled. To the past is fulfilled. थर्ड ऑप्शन है stipulated भी नहीं है, ये वर्ब है, इसका मतलब assume, disprove, वेरी सिंपल वर्ड fulfilled. तो हमारा आंसर बनेगा fulfilled in period with substantial dash changes. सेकेंड ऑप्शन में changes. Upswing mean rise. Insurgents mean rebel, one who try to revolt. और हमारा फिर आंसर बनेगा ब्लैंक बी का नंबर या ब्लैंक 2 का चेंजेस. थर्ड वन चेंजेस. तो चले वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. इन द पॉलिटिकल वर्ड, however, is a contrast, is a trigger word.
प्रिडिक्शन कैन बी डैश, कैन बी डैश। और तीसरे ऑप्शन में है प्रीलियसली, मीन डेंजर या रिस्क। सो हमारा आंसर फिर बनेगा पहले ब्लैंक का फुलफिल्ड, दूसरे ब्लैंक का चेंजेस और तीसरे ब्लैंक का प्रीलियसली। तो चलें फिर हम अगला करते हैं। नेक्स्ट है अगला, वाटर इज वन ऑफ द फ्यू molecules that is less dash. Molecule is a kind of chemical or compound. ठीक हो गया। Water is one of the few molecules that is less dash. That is less dash. If you need dash, ठीक हो गया। Just look at the floating ice in your water glass. और हमारा फिर इंडिकेशन बनेगा फ्लोटिंग आइस। द फर्स्ट ऑप्शन, I mean that the first clue of first trigger, then is one of the most important word over here. Then is also our trigger word. तो मैं आई वुड लाइक टू से दैट देन इज अवर फर्स्ट ट्रिगर एंड फ्लोटिंग आइस इज दैट ऑफ द सेकेंड ट्रिगर। तो चले वी मूव टूवर्ड अवर आंसर। वाटर इज वन ऑफ द फ्यू मॉलिक्यूल्स दैट इज लेस डेंस। इज दैट क्लियर? एज अ सॉलिड, then is our indication toward our answer. Then is a trigger word as a dash. As a dash mean liquid. If you need dash, if you need, और थर्ड हमारा ऑप्शन है an illustration. Just look at the floating ice in your water glass. Then and floating ice is our indication towards our answer. तो ये हमने कर लिया है। ये तीन ऑप्शन है, तीन ब्लैंक हैं, तीन बॉक्सेस है, ये हमने कर लिए हैं। तो चलें फिर हम अगला करते हैं, नंबर 4। इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टू अवर नंबर 4। वी ट्रैवल फ्रॉम one place to another. Now we move towards number 4 या 9 भी आप कह सकते हो। As mole is our indication towards our answer. The trigger word was dash, Spanish, with her friends before their trip to Chile, she discovered that although is also our indication as a trigger word, she could comprehend her friend, she could not dash her thought in the dash language. तो हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। We have 3 boxes at our disposal. पहला है mastering, is a very simple word. Disregarding, simple. Practicing. So practicing is our indication. Practicing is our answer. Practicing is our answer. Is that clear? और मैं पहले इसको कर लूँ फिर हम उस तरफ आते हैं। Acknowledge, this is not our answer. Articulate. Is that clear? Articulate is our indication towards our answer. ठीक है। और although जो है हमारा ट्रिगर वर्ड है ब्लैंक सेकंड का ट्रिगर वर्ड articulate. इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3, वी मूव नंबर 3। ये नंबर 3 है इनहेरेंट, ऑब्जेक्टिव, अनफेमिलियर इज अवर इंडिकेशन टूवर्ड्स अवर आंसर। अनफेमिलियर इज अवर आंसर। और पहले ऑप्शन में पहले बॉक्स में है प्रैक्टिसिंग, दूसरे बॉक्स में है आर्टिकुलेट और तीसरे बॉक्स में है इज दैट क्लियर अनफेमिलियर, ABCC। तो चले फिर हम ऊपर इसको एनालाइज कर लेते हैं एक दफ़ा।
as Mole was practicing Spanish, is that clear, with her friend before their trip to Chile, comma, she discovered that although is our indication towards the answer of second box, is that clear? She could comprehend mean understand our friend. She could not dash could not, ये थर्ड में सेकंड में है, आर्टिकुलेट हर थॉट इन दी डैश. अब तीसरा जो ब्लैंक है, अनफेमिलियर लैंग्वेज. अनफेमिलियर लैंग्वेज. सो हमारा आंसर फिर बनेगा नंबर 9 का. पहले बॉक्स में है प्रैक्टिसिंग, दूसरे बॉक्स में है आर्टिकुलेट. इज दैट क्लियर? जिसका दूसरे बॉक्स में जो आल्दो है इज अवर ट्रिगर वर्ड, और तीसरा जो है ये है अनफेमिलियर. सो दिस इज़ आवर आंसर. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अब हम करेंगे आखिरी 10, ताकि आप भी थक न जाएं, क्योंकि हमारी कौम जो है जल्दी थक जाती है. इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना ना थकाऊं. तो जितना थोड़ा काम समझ जाएंगे, कर लेंगे, तो इट्स गुड फॉर यू. तो चलें फिर हम करते हैं. पीपल अकस्टम टू थिंकिंग दैट द ह्यूमन लाइफ स्पैन. पीपल अकस्टम आदि होते हैं टू थिंकिंग, ये सोचने में, दैट द ह्यूमन लाइफ स्टाइल डैश the outer bounds of animal longevity tend to dismiss tales of muscat balls being found in shells of living turtle. Samantha Romane, however, is our also indication to our answer, argue that while such stories may be dash, some turtle do indeed exhibit a phenomenon known as negligible, is also our indication towards our answer. The trigger word dash, showing no sign of aging even as they pass the 2-century mark. यानी 200 साल भी हो जाए तो आप इसको मार्क नहीं कर सकते. तो चले हम फिर करते हैं. तो पहला है ऑप्शन, पहले मैं आई वुड लाइक टू एनालाइज. पहला है पीपल अकस्टम टू थिंकिंग दैट द ह्यूमन लाइफ स्पैन. डिमार्केट मीन डिफाइन. डिमार्केट डिफाइन. इज दैट क्लियर? द आउटर बाउंड्स ऑफ एनिमल longevity is also an indication towards our answer. The trigger word tend to dismiss tales of muscat balls being found in the shells of living turtle. Samantha Romane, however, arguing that while such stories may be dash, अब आप सेकंड बॉक्स की तरफ आ जाए. सेकेंड बॉक्स में आ जाए. अपोक्रिफल मीन क्वेश्चनेबल. अपोक्रिफल मीन क्वेश्चनेबल. दिस इज अवर आंसर. दिस शुड बी अवर आंसर. अपोक्रिफल मीन क्वेश्चनेबल. इज दैट क्लियर? तो चले हम तीसरा करते हैं. थैंक यू, सॉरी फॉर दैट. A phenomenon known as negligible dash. अब तीसरी ऑप्शन में आप आ जाए. You should come towards third option. Is that clear? थर्ड ऑप्शन है senescence, mean becoming old. Senescence is our indication towards the answer. और पहला जो था हमारा आंसर वो था बिलीज नहीं भाई. डिमार्केट इज अवर आंसर. डिमार्केट मीन टू डिफाइन. और बॉक्स बी में अगर आप आ जाए, अपोक्रिफल मीन ओल्ड एज. अपोक्रिफल, सॉरी फॉर दैट. अपोक्रिफल मीन क्वेश्चनेबल.
और रिजुवेनेशन दोबारा ज़िंदगी, सुपरन्यूएशन मीन रिटायरमेंट, और अगला जो है आखिरी विच इज़ अवर आंसर, विच शुड बी अवर आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर, तीसरा है ABC, थर्ड सीनेसेंस मीन बिकमिंग ओल्ड। सो आज तक तो हम इतने ही करेंगे, बाकी फिर हम करेंगे कल। तो आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, हमारा पहला जो आंसर बनेगा, इज़ दैट क्लियर? जो हमारा पहला आंसर बनेगा वो है, यानी डिमार्केट मीन टू डिफाइन, और अपोक्रिफल मीन क्वेश्चनेबल, और तीसरा है सेंसोई सीसन्स सीसन मीन बिकमिंग ओल्ड। तो आज हमने किए हैं tax competition. We have done today tax competition. There are three things in our, that GRE in verbal. If you are trying to have a verbal have, that of the three things. And what are the three things? Reading comprehension, sentence equivalence, and tax completion. Tax completion, reading comprehension, and सेंटेंस इक्विवेलेंस। तो ये हम कर चुके हैं, तो बाकी फिर हम करेंगे कल। दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। सम स्टूडेंट आस्क मी दैट दिस इज़ डिफ़िकल्ट, सो फॉर एज आई नो दैट इट इज़ द मैन्यूवरिंग ऑफ वर्ड्स। इफ़ यू fight with the word, if you try to fight with the vocab, then it's not difficult. First thing is very important, that is your vocab and then grammar. If you are trying to competent, if you try to grip out of these kind of things, then this is not difficult. What is difficulty? Your lack of concentration. Again, I am of the opinion, your lack of concentration try to play a greater role in your failure. So if you want to get success, you must be 100% concentrate, nothing but concentrate. And if you try to concentrate, you will definitely get lot of success. तो आखिर में एक बात मैं और रिपीट करना चाहता हूँ, थोड़ा कर लें, समझ के करें, और फिर आप ज़्यादा भी कर लेंगे। अगर आप आज 2 चीज़ें कर रहे हैं तो 2 को 4 में कर सकते हैं कन्वर्ट, 10, 15, 20, 100 इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन ट्राई टू कंसंट्रेट, नथिंग बट टू कंसंट्रेट। अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो छोटी चीज़ों को समझ जाएंगे। कम मिकदार में आप करें क्वेश्चन, 2 से करें, 4, 5, 10, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मुश्किल नहीं हो। मुश्किल ये है कि यू लैक कंसंट्रेशन। इफ़ यू लैक कंसंट्रेशन, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। इज़ दैट क्लियर? So I am very much positive about my younger youth. If they try to utilize their energy, their power, their sagacity, their wisdom, their enlightenment, their cognitive skill, their craftsmanship, their experience of life, then they can transform this life into a failure into success. Is that clear? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।